Students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 6, the triangle and its properties. Students, first of all we are going to discuss about exterior angle sum property. Okay, exterior angle property of a triangle. An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angle. Okay, in this figure you can see angle ACD is the exterior angle and angle A plus angle B. Angle A and angle B, both angle are interior opposite angle. So according to exterior angle sum property, exterior angle is equal to sum of interior opposite angle, means angle ACD is equal to angle A plus angle B. Okay, ACD we can write it as angle ACD. Angle ACD is equal to angle A plus angle B. Okay, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है. ओके, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. ओके, अगर ये एक्सटीरियर एंगल ए सी डी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एंगल ए 65 डिग्री प्लस एंगल बी 65 डिग्री, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए सी डी 130 डिग्री आ जाएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2. एक्सरसाइज 6.2, फर्स्ट क्वेश्चन हैज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम. स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस दिए हुए डायग्राम में एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. एक्सटीरियर एंगल एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल अननोन है, एक्स है, इस एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है. ओके, आप जानते हैं कि फार्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, 50 प्लस 70. तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री. Okay, now see the solution of question number first, part 1. Solution of question number first, part 1. According to angle exterior angle sum property, okay, exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. So x is equal to 50 plus 70 degree is equal to 120 degree. Okay, x is equal to 120 degree. It is the answer. Next, part B has given. Here is the diagram. It is exterior angle and these are interior opposite angle. So according to exterior angle sum property, exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. So x is equal to 65 plus 45 degree. Okay, 65 plus 45 degree is equal to 110 degree. It is the answer. Okay, next, part 3 has given. Here is the diagram. X, it is exterior angle, and what is interior opposite angle, 30 degree and 40 degree. So according to exterior angle sum property, exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. So x is equal to 30 degree plus 40 degree is equal to 70 degree. Okay, it is the answer. Similarly, you can solve part 4, 5 and 6 as homework. Okay, next question, question number 2, find the value of the unknown interior angle x in the following figure. इसमें आपको क्या करना है, find the value of unknown interior angle x. ये इंटीरियर एंगल x दिया हुआ है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है. ओके, यू नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, सो x प्लस 50 इज इक्वल टू 115 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 115 माइनस 50 is equal to 65 degree. Okay, value of x is equal to 65 degree. Now see the solution of question number 2, part 1. Solution of question number 2, part 1. Here is the figure. You know that
According to exterior angle sum property, exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. So we can write x plus 50 is equal to 115 degree according to exterior angle sum property. So x is equal to 115 degree minus 50 degree. Okay, transpose 50 degree to right hand side. Okay, you know that when we transpose any variable or constant to other side, then sign will be changed. So plus 50 degree minus 50 degree. Okay, now x is equal to 115 degree minus 50 degree is equal to 65 degree. So the value of x is equal to 65 degree. Similarly, question number second, part 2. Here is the diagram. Now find the value of x. According to exterior angle sum property, exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. So we can write it as 70 plus x is equal to 100 degree. Exterior angle, now transpose 70 degree to right hand side. So we can write it as x is equal to 100 minus 70 is equal to 30 degree. It is the value of x. Next, part 3 has given. Here is the diagram. It is 90 degree angle, it is x, and exterior angle 125 degree. You know that according to exterior angle sum property, exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. So we can write it as x plus 90 degree is equal to exterior angle 125 degree. Now transpose 90 degree to right hand side. So x is equal to 125 degree minus 90 degree. Now x is equal to 125 minus 90 is equal to 35 degree. So the value of x is equal to 35 degree. Similarly, you can solve part 4, 5 and 6 as homework. Okay, thanks.